everyone, myself Megha Pathak from DPS Sardani Lamachon, your bio teacher. Children, as you know that we are doing revision, so today we are going to study about respiration. We have already studied about it, but still we are revising all the chapters. So let's start. What is respiration? Respiration is the breaking down of organic compounds, particularly glucose, to release energy. So respiration is the process in which chemical energy is converted into usable energy in cell. Okay, so let's study breakdown of glucose by various pathways. Glucose, which is a 6-carbon compound, so in cytoplasm it is converted into pyruvate, and this process is called glycolysis. Okay, and this is a common step of aerobic and anaerobic respiration. So there are 3 ways by which glucose is converted into different substances. First, in the absence of oxygen, means when there is no oxygen. So glucose first is converted into pyruvate, and this pyruvate is converted into ethanol or alcohol, which is a 2-carbon compound, and pyruvate it is a 3-carbon compound, while glucose it is a 6-carbon compound. Please concentrate over here that glucose it is a 6-carbon compound, and when it is converted into pyruvate, so this pyruvate is 3-carbon compound, and in absence of oxygen, when there is oxygen absent, so it is converted into ethanol. Ethanol it is a 2-carbon compound, and plus carbon dioxide plus energy. And next step, in lack of oxygen, when there is oxygen present but in insufficient amount, जब oxygen पूरी तरीके की कमी होती है, and this process occur in मसल टिश्यू, हमारी बॉडी में भी होती है प्रोसेस मसल्स में. तो इन दिस प्रोसेस पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड व्हिच इज अ 3-carbon कंपाउंड, ओके, प्लस एनर्जी. एंड नेक्स्ट प्रोसेस इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड दिस प्रोसेस अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, प्लीज रिमेंबर जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. In this process, pyruvate is converted into carbon dioxide, water plus energy. So these are the 3 pathways, these 3 different pathways by which breakdown of glucose occur in a cell. First process, glycolysis, which occurs in cytoplasm, and next, in the absence of oxygen, which occurs in yeast and some bacteria. जिसमें जो पायरुवेट है इसका कन्वर्जन एथेनॉल में होता है. एथेनॉल इट इज अ 2-carbon कंपाउंड, एंड नेक्स्ट स्टेप, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, दिस प्रोसेस occurs in our body, in our muscles. देखिए, जब हम पूरी तरीके से ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते हैं, हम बहुत जल्दी वर्कआउट करते हैं, तब ये प्रोसेस होती है और इसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, एंड सडनली वी हैव गॉट क्रैम्प, और अचानक से हमें कभी क्रैम्प हो जाता है, तो दिस हैपेंस ड्यू टू lactic acid formation, and it is a 3-carbon compound. And presence of oxygen, in the presence of oxygen, this process occurs in mitochondria, in plants and in animals also, और इसमें energy बहुत ज़्यादा amount में release होती है. Now children, let's study about human respiratory system. Respiratory system in human beings serves to provide fresh oxygen to all body cells, and it removes carbon dioxide which is formed after respiration from the body. देखिए, जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसका मेन काम बॉडी सेल्स को, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, और रेस्पिरेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसका रिमूवल. एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स: नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli and lungs. So these are the different organs which forms the respiratory system. And you know, our vital organs like lungs and heart, these organs are protected by ribs, and there are 12 pair of ribs present in our body, in our thoracic region. Ribs का main काम lungs को और heart को protect करना है. And there is a muscular partition present in our thoracic cavity which keeps separate chest from the abdomen. देखिए, एक muscular partition, एक muscular flap, diaphragm भी present होता है जिसका मेन काम चेस्ट को
तो एब्डोमिनल रीजन से सेपरेट रखना है. एंड इट ऑल्सो फॉर्म्स द बेस ऑफ द चेस्ट कैविटी. और डायफ्राम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में भी हेल्प करता है. सो चिल्ड्रन, नाउ लेट्स स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. Nostrils. We take in air through nostrils and it is lined by fine hair and mucus which filters the air. The air that we are taking in, if it has dust particles or some insects, so these fine hair and mucus, they trap these unwanted particles. The inhaled air from nostrils leads to nasal passage, and nasal passages are paired tubes in the roof of buccal cavity. And the moist mucus lining of nasal passages makes the air moist. And nasal passage warms or cools the air to body temperature before it enters the lungs. देखिए, जो nasal passage में mucus लाइनिंग है, उससे क्या होता है, एयर मॉइस्ट होती है और ये जो एयर बॉडी में एंटर करती है लंग्स पे हमारे, उसका टेम्परेचर ये मेंटेन करता है. मीन्स इट वार्म्स और कूल द एयर अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर. And in pharynx, the food and air tubes cross each other. देखिए, till pharynx there is a common passage of food and air. And pharynx, it passes the air into larynx. Larynx, which is called sound box. It produces sound. And next part is trachea, which is called windpipe. So it is a long tube and the air passes from pharynx and goes into trachea. And trachea or windpipe, it is supported by C-shaped cartilaginous rings. देखिए, जो windpipe है इसमें C-shaped cartilaginous rings होते हैं और इन rings का मेन काम क्या होता है? They prevent trachea from collapsing when there is no air in it. जब windpipe में air नहीं होती है तो ये C-shaped rings windpipe को collapse होने से prevent करते हैं. Now next part, bronchi. And trachea, in thoracic cavity, it divides into two smaller tubes which are called bronchi, which further extends into each lungs. देखिए, जो ट्रैकिया है, विंड पाइप है, ये चेस्ट कैविटी में दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट, जो कि लेफ्ट लंग और राइट लंग में एंटर करती है. एंड ब्रोंक्यूल्स, bronchi, they are subdivided into smaller tubes which are called bronchioles, and each bronchiole finally terminates into many alveoli. And alveoli are balloon-like structures which are located inside the lungs. And a large number of alveoli increases the surface area for the exchange of gases. Alveoli are the tiny air sac which are present inside the lungs. और alveoli surface area increase करते हैं for gaseous exchange. And the main respiratory organs are lungs. So there is a pair of highly spongy lungs present in a thoracic cavity, and right lung is larger because it has 3 lobes, while the left lung, it has just only 2 lobes. देखिए, जो लेफ्ट लंग होता है ये, इसमें केवल 2 लोब्स होते हैं, जबकि राइट लंग में ये थोड़ा सा बड़ा होता है लेफ्ट लंग से, इसमें 3 लोब्स होते हैं. एंड वाई लेफ्ट लंग इज स्मॉलर? टू अकोमोडेट हार्ट. देखिए, हमारा जो लेफ्ट लंग है वो छोटा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो हार्ट है ये लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है. नाउ लेट्स स्टडी द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन बींग्स. वी टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड इट इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग. मीन्स जो हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. फर्स्ट एयर इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स, जहाँ पर ये फिल्टर होती है, और दिस एयर पासिस थ्रू ट्रैकिया. फिर ये एयर ट्रैकिया से पास होती भी ये हमारे लंग्स में जाती है. अब व्हेन एयर इज फिल्ड इन आवर लंग्स, चेस्ट कैविटी, इट बिकम्स लार्जर. हाउ? ड्यू टू फ्लैटन डायफ्राम एंड लिफ्टेड रिब्स. देखिए, जैसे ही एयर हमारे लंग्स में एंटर करती है तो हमारे जो चेस्ट कैविटी है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और जो डायफ्राम है ये फ्लैट हो जाता है, और रिब्स दे मूव आउटवर्ड. एंड एयर, इट इज फिल्ड इनटू एयर सैक विच आर प्रेजेंट इन दी लंग्स. और जो एल्वियोलाई है,
इनमें क्या होता है, देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स में आ जाती है और लंग्स से फ्रेश एयर ऑक्सीजन ब्लड में आ जाती है. Now during the time of exhalation, chest cavity it is compressed due to relaxation of ribs and diaphragm, and air it is forced out of the lungs to atmosphere. देखिए exhalation के समय जो chest cavity है वो compress होती है क्योंकि ribs और diaphragm ये relaxation होता है इनमें, और जिससे chest cavity का वॉल्यूम कम होता है और एयर जो है वो लंग से बाहर एक्सपेल कर दी जाती है इनटू एटमॉस्फेयर विच इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच. चिल्ड्रन, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन बींग्स. एंड चिल्ड्रन, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, during breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air. So what is residual volume? Residual volume is the amount of air that remains in a person's lungs आफ्टर फुल्ली एक्सेलिंग. देखिए एक्सेलेशन के बाद भी जो एयर हमारे लंग्स में रहती है उसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं. एंड इट प्रोवाइड्स सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड फॉर CO2 टू बी रिलीज्ड. और ये गैसियस एक्सचेंज के लिए सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड करती है.